आप भी of course input देंगे अपना. I'll be doing some ETV questions, some P2 questions, right, which are very important, which I always share in every session. So please make sure you get each and every word of mine. It's extremely important, right? So ये आपसे lecture of course share भी करूँगा, लेकिन please एक एक बात लिखिए और एक एक बात याद रखिएगा. Why? Because the words said in these questions and the upcoming questions will be very important for the examination for both O-level and IGCSE. Okay, I hope I make it very clear. So I'm rotating my screen. I'm again saying you, I'm actually, I'm actually putting those MCQs, the 20 MCQs left on hold, unless we redo them, right? Until then, doing some questions. First, I'm starting off with the ATP. Okay, so let's stay focused, everyone. Please stay very focused. Just a moment. Okay, so I hope you all can see the screen now. सवाल तो एटीपी के हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा प्लीज. वन थिंग आई मस्ट मेक यू वेरी क्लियर कि इस मर्तबा एटीपी के सवाल एक्सपेक्टेड है कि पेपर 2 में भी आएंगे. एक आध सवाल पेपर 2 में आ सकता है एटीपी का, तो इसलिए बिल्कुल ही एटीपी साइड पे नहीं कर देना, राइट? यू विल सी सम क्वेश्चंस. जी हमजा, we will be doing I mean that paper as well as those 20 MCQs later. Please stay focused. So in this part of past paper, I'm solving 2 questions. These both questions are really important for O-level and IGCSE, right? In fact, I must tell you that there is a huge overlap between the syllabi and the questions of O-level and IGCSE, where it's different. Of course, it'll be taught in a different way. Now, I've taken these 2 questions from IGCSE. So they're important for IGCSE, but they're equally important for O-level. So of course, they're both of you first. Now guys, everyone, let's start off. In question 1, it says that 2 substances, solution F and solid G were analyzed. Solution F and solid G were analyzed. In चीजों पर जरा हल्का ध्यान दिया करें कि what's going on. He says solution F was hydrochloric acid. So solution F is hydrochloric acid. Right? लेकिन अभी हमें solid G नहीं पता. And the tests were done on both F and G. Now he starts off firstly with the tests. एक सेकंड में जरा आपको इसका PDF वर्जन भेज दूं. I hope I have it. मैं इसका PDF version बस पढ़ा नहीं हुआ. I don't have the PDF version, guys. I'm sorry for that. With other, are really important for O-level and IGCSE, right? In fact, I must tell you that there is a huge overlap between the syllabi and the questions of O-level and IGCSE, where it's different. Of course, it'll be taught in a different way. Now, I've taken these 2 questions from IGCSE. So they're important for IGCSE, but they're equally important for O-level. So of course, they're both of you first. Now guys, everyone, let's start off. In question 1, it says that 2 substances, solution F and solid G were analyzed. Solution F and solid G were analyzed. In चीजों पर जरा हल्का ध्यान दिया करें कि what's going on.
He says solution F was hydrochloric acid. So solution F is hydrochloric acid. Right? लेकिन अभी हमें solid G नहीं पता. And the tests were done on both F and G. Now he starts off firstly with the tests on solution F first. Okay? Listen please carefully. He says complete the expected observations. Solution F was divided into 4 equal portions. यानी कि उसने जो है ना basically 4 beakers ले लिए और 4 beakers में उसने solution F डाल दिया. Solution F means hydrochloric acid. So in all 4 beakers we have solution F, and by the way, don't remember that it is hydrochloric acid. Okay, the pH of the first portion of solution was tested. इसका उसने pH find किया. तो guys, I mean any pH 0 लिख दें, 1 लिख दें, फिर 2 लिख दें, 3 लिख दें, strong acid है, चलो 1 लिख दें. Magnesium ribbon was added to the second portion. अब इसमें वो Mg ribbon add करता है. Now I hope you remember that when I add magnesium to hydrochloric acid, so I think that hydrogen gas is produced. याद है ना ये equation आपको कि जब Mg react करता है HCl से तो आपको salt और hydrogen gas देता है और इसकी आपको effervescence दिखती है. I hope you remember, right? मैंने साथ syllabus revise करवाना है. So I think observations. अच्छा उसने कहा है magnesium ribbon was added. Now the gas produced was, tested. It means observation के बाद मुझे gas का test भी explain करना है. So it means that कि hydrogen gas निकल रही है तो effervescence होगी. और test क्या होता है कि आप hydrogen gas को pass करें और lighted splint तो it pops up, right? So how will we go about it? So we say that effervescence is observed, hydrogen gas produced is passed over a lighted burning splint. Hydrogen gas produces a popping sound. अब यहाँ मार्क्स किस चीज के हैं? क्या आपने बताया कि effervescence ऑब्जर्व हुई? क्या आपने बताया कि हमने इसको लाइटेड स्प्लिंट से पास किया? और फिर क्या आपने बताया कि इसकी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हुई? तो गाइस, you're scoring 3 marks. Interesting, yeah? Then in part C, he says that dilute nitric acid and aqueous silver nitrate were added to the third portion of solution F. By the way, everyone, why silver nitrate is added? I hope you know from acids versus salts chapter when we teach you test of cations and anions. So aqueous silver nitrate is a test of halides. जब भी हमने हैलाइडाइन टेस्ट करना होता है हमेशा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं. ठीक हो गया? सो गाइस, सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया तो उसने कहा अब मुझे पता है कि आप वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया. हमने नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया? पर उसको फर्दर एसिडिफाई करने के लिए कि कोई और इंप्योरिटी है कार्बोनेट के अंदर तो वो खत्म हो जाए इंप्योरिटी. वैसे कुछ जरूरत नहीं थी इतना, लेकिन बट स्टिल ही टोल्ड यू अबाउट दैट. तो मुझे बताएं सिल्वर नाइट्रेट आप डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो फिर AgCl का वाइट पीपीटी बन जाएगा ना कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट डाला आपने HCl में. इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इट गिव्स यू AgCl प्लस HNO3 जिसकी आयोनिक इक्वेशन इज लाइक दिस. इज दैट सो? Ag plus chloride, it gives you AgCl, white PPT. This is white PPT, isn't it? So can I say that so white precipitate is produced? I'm going to part B. We say that effervescence is observed, hydrogen gas
produced is passed over a lighted या burning splint. Hydrogen gas produces a popping sound. अब यहाँ मार्क्स किस चीज के हैं? क्या आपने बताया कि एफरवेसेंस ऑब्जर्व हुई? क्या आपने बताया कि हमने इसको लाइटेड स्प्लिंट से पास किया? और फिर क्या आपने बताया कि इसकी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हुई? तो गाइस, you're scoring 3 marks. Interesting, yeah? Then in part C, he says that dilute nitric acid and aqueous silver nitrate were added to the third portion of solution F. By the way, everyone, why silver nitrate is added? I hope you know from acids versus salts chapter when we teach you test of cations and anions. So aqueous silver nitrate is a test of halide. जब भी हमने हैलाइडाइन टेस्ट करना होता है हमेशा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं. ठीक हो गया? सो गाइस, सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया तो उसने कहा अब मुझे पता है कि आप वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया. हमने नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया? पर उसको फर्दर एसिडिफाई करने के लिए. कोई और इंप्योरिटी है कार्बोनेट शार्बोनेट के अंदर तो वो खत्म हो जाए इंप्योरिटी. वैसे कोई जरूरत नहीं थी इतना, लेकिन बट स्टिल ही टोल्ड यू अबाउट दैट. तो मुझे बताएं, सिल्वर नाइट्रेट आप डाल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो फिर AgCl का वाइट पीपीटी बन जाएगा ना कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट डाला आपने HCl में. इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इट गिव्स यू AgCl प्लस HNO3 जिसकी ionic equation is like this. Is that so? Ag plus plus chloride, it gives you AgCl, white PPT. This is white PPT, isn't it? So can I say that it's a white precipitate is produced? अगर आपसे पूछे किसका white PPT है तो फिर वो AgCl का white PPT है. So उसने पूछा नहीं है तो simple observation is white precipitate. Interesting. Then in part D, aqueous barium nitrate were added. Guys, barium nitrate हमेशा add करते हैं to test for sulfate. Right? ये तो अब उसने इसके अंदर बेरियम नाइट्रेट ऐड कर दिया. ऊपर देखें इन द बीकर. अब जब वो यहां पे बेरियम नाइट्रेट ऐड करेगा इसके अंदर, राइट, तो कुछ भी नहीं होगा. नथिंग. आई मीन माना बेरियम क्लोराइड बनेगा लेकिन वो तो एक्वस सॉल्ट है. ये सॉल्यूशन भी एक्वस, बेरियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक भी एक्वस, तो सॉल्ट भी एक्वस ही बन रही. कोई ऑब्जर्वेशन तो आई नहीं. सॉल्ट अगर इनसॉल्युबल बने तो ऑब्जर्वेशन आएगी ना. जिस तरह सिल्वर नाइट आपने ऐड किया HCl तो AgCl सॉल्ट बने तो वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है व्हाइट PPT. तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी बहुत स्ट्रेट अवे. सो गाइस, इन दिस केस इट्स नो चेंज. So I think shall I write it here for you so that you are very much clear in these perspective. जब भी आपने टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस करना है तो हम हमेशा सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं. और जब भी आपने टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस करने हैं तो यू ऑलवेज ऐड बेरियम नाइट्रेट. तो आई थिंक देखिए, जब आप whenever you are barium ions, right, so you are testing for sulfate ions. Please remember, ions ऐड कर रहे हैं तो आप बेसिकली सल्फेट आयंस का टेस्ट कर रहे होते हैं. उसने कहा है कि हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया फॉलोड बाय बेरियम नाइट्रेट. आई होप यू नो दैट कि whenever you test for sulfate ions or any halide ions, you always acidify the solution first with nitric acid to remove any impurity like carbonate. फिर you do the test. पहले उसने नाइट्रिक एसिड ऐड किया टू रिमूव एनी इंप्योरिटी, लेट्स से कार्बोनेट. फिर उसने बेरियम आयन ऐड किया, फिर बेरियम नाइट्रेट ऐड किया. बेरियम आयन ऐड करने के बाद, राइट, उसने कहा सॉल्यूशन वाज एडेड टू पोर्शन F. ठीक है. अब जाहिर सी बात है कि इसने ऊपर जो बताया है आपको, इफ आई गो बैक,
एक मिनट बंदों को ऐड कर लो प्लीज. Okay. So basically, if I add barium ions and if white PPT is produced, तो फिर sulfate ion is present. And if white PPT is not produced, तो sulfate ion is not present. Okay. So ये वो ऊपर से explain कर रहा है पूरा solution. If you can see, divided more I join late. मैं यहाँ से वापस करता हूँ थोड़ा सा और फिर listen carefully. सॉल्ट में तो वो सॉल्ट अगर इनसॉल्युबल बने तो ऑब्जर्वेशन आएगी ना. जिस तरह सिल्वर नाइट आपने ऐड किया HCl तो AgCl सॉल्ट बने तो वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है व्हाइट पीपीटी, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी बहुत स्ट्रेट अवे. सो गाइस इन दिस केस इट्स नो चेंज. So I think shall I write it here for you so that you are very much clear in these perspective. जब भी आपने टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस करना है तो हम हमेशा सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, और जब भी आपने टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस करने हैं तो यू ऑलवेज ऐड बेरियम नाइट्रेट. So I think some things should really strike in your brains immediately. Great. Let's move on. Now we have the test in solid G. Now it says that some of the tests and observations are shown. अब यहां इस साइड पे वो टेस्ट्स लिख रहा है, ठीक है, ये टेस्ट्स हैं और ये उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें G डिफाइन करना है. ठीक हो गया, इंटरेस्टिंग. वो कहता है इट्स अ वाइट सॉलिड. ओके, इट्स अ वाइट सॉलिड. ग्रेट. नाउ he says in the test 1, here we are, he says a dilute hydrochloric acid was added to G and the gas produced was tested. चलिए, गैस क्या है? Rapid effervescence was produced. Lime water turned milky. It means the gas is carbon dioxide and the anion is carbonate. इसका मतलब है कि सॉलिड G में एक आयन कार्बोनेट है. अब दूसरा कैटायन बच गया कि व्हाट्स अ कैटायन. If you remember your syllabus, to test for cations, you always add aqueous NaOH and aqueous ammonia. याद है? तो टेस्ट ऑफ कैटायंस के लिए आप दो रिएजेंट्स यूज करते हैं, एक aqueous NaOH और एक aqueous ammonia. You add dropwise, observe the precipitate formation. You add excess to check its solubility. It's how you do. उसने भी यही किया. आप देखेंगे कि टेस्ट 2 में now he adds excess aqueous NaOH, right? इसका मतलब है कि उसने few drops में सीधा excess ही डाल दिया. Is that so? तो क्या हुआ? White PPT was observed which was insoluble in excess. In the second जो part उसने excess ammonia add किया, no precipitate. So can you recall the table? If you recall the table, guys, तो वो टेबल क्या था? I think that this is a test of calcium, क्योंकि calcium ions के precipitates in aqueous NaOH are insoluble and in aqueous ammonia there is no precipitate. So the cation is calcium and it is carbonate. Identify solid, so it's calcium carbonate. So you've scored the mark. 1 mark iska, 1 mark iska, and you score 2 marks. Interesting. Chale, let's move on. Now this is something interesting. It's a planning part. Just read through this part for a couple of minutes and then I start off. Read this very carefully, guys. ताकि जब मैं solve करना start करूं तो at least you have something in the back of your brains.
Sir, can you rewind to the previous part? Okay. Read through this. One mark इसका. And you guys. तो table क्या था? Sir, यहाँ I pause कर think दो 2 that मिनट, just copy this कर लो. is a test of Excuse me, sir. जी बच्चा. Assalamualaikum, sir. Sir, Exam. I thought कि आज class जो थी वो 3 to 4 थी. Could you please share the recording after the class? क्योंकि मैंने थोड़ी सी miss कर दी है. Okay, I'll do that. Thank you, sir. No problem. Shall I go on, बच्चा? Great. calcium. क्योंकि calcium ions के precipitates in aqueous NaOH are insoluble, and in aqueous ammonia there is no precipitate. So the cation is calcium and it is carbonate. Identify solid, so it's calcium carbonate. So you've scored the mark. 1 mark iska, 1 mark iska, and you score 2 marks. Interesting? Chale, let's move on. Now this is something interesting. It's a planning part. Just read through this part for a couple of minutes and then I start off. मैंने अभी टाइम दिया हुआ है इसको रीड करने का. एटलीस्ट अपने अपने ज़हन में इसको प्लीज इसको प्रोसेस कर लें. प्लीज प्रोसेस इट. Investigation to show that water. That about the steel marks, man. Let's not. So guys, are you enjoying with the questions? 6 marks, man. He says that steel nails rust in the presence of air and water. That about the steel में iron होता है तो iron rust करता है. Plan an investigation to show that the steel nails
with the paint helps protect the nails from rusting. And then of course ये coating with zinc, I mean ये आपकी electroplating होती है, हमारे इनको उसमें galvanize कर रहे हैं zinc से, electroplate कर रहे हैं zinc से. So I think zinc will not allow the nail to rust, and determine which coating is more effective at protecting steel nails from rusting. Okay. So I think that how will you go about it? I think आप ऐसा करेंगे कि आप इन नेल्स को पानी में डाल देंगे, ठीक है, और एक हफ्ते के लिए छोड़ देंगे. नहीं, ये नहीं कि पानी में डालने से पहले पहले आप इस तरह के नेल्स को वे कर लें, राइट, वे द नेल्स, पानी में डाल दें, फिर एक हफ्ते पानी से बाहर निकालें और उनको रीवे कर लें, तो साफ चल जाएगा पता कि रस्टिंग किसकी ज़्यादा हुई है. जिसका मैथ ज़्यादा इंक्रीज किया होगा ज़्यादा रस्ट किया होगा. ट्रू है ना, कि रस्ट इज आयरन 3 ऑक्साइड, तो उसके ऊपर ग्रेफी 2O3 भी लग गया, एक ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो mass increase will tell you that which one has the best coating. Interesting. How will we write it? So let's see. So basically I think that how will you go for is that you will weigh the nails and place them in water in a beaker, right? फिर वैसे by the way, you know what, आपको यहीं पे you know like आपको 2-3 और मिल जाएंगे टेक्निकली. आपने नेल्स बे किए और उनको वाटर में रख दिया, तो 2 मार्क्स आपको यहीं मिल गए हैं, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमने पानी डाल दिया. नाउ लीव these nails in water for a week, let's say. Leave the nails in water for a week. Now here you score the 3rd mark, right? अब जब हो गया तो इसके बाद एक हफ्ते बाद फिर आपने नेल्स निकालने और आपने उनको रीवे करना है, राइट. सो नाउ इज दैट आफ्टर वीक nails are observed and reweighed. यहां पे आपको 4th मार्क मिल गया, आपने नेल्स को रीवे कर लिया. आई थिंक दैट कि आपने ये जो प्रोसेस आपने रिपीट करना है विद अदर कवरिंग्स, यानी कि आपने इस तरह किया बेसिकली. एक ये जो आपने नेल्स लिए हैं ये आपने कोटेड पेंट ले लिए हैं, इसको हफ्ते के लिए डाल दिया है एक बीकर में आपने लेट्स से जिंक कोटिंग वाला डाल दिया, एक में आपने सादा नेल डाल दिया. ट्रू. तो बताना पड़ेगा कि यू हैव टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद अदर यू नो आप कवरिंग्स बेसिकली. सो यू से दैट कि repeat the experiment with nails with No, ये अब 3 different beakers में होगा ना, एक ही बीकर में थोड़ी डाल देना है. other coverings. So here you score the 5th mark, right? और आप कर लेंगे तो फिर इवेंचुअली मुझे बताएं जब रीवे करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि you know which nail has rusted most, right? So I think that the nail which will show an increase in mass, a great increase in mass, would have rusted more. So nail with the greatest increase in mass
has rusted more? So I think that here you score the 6th mark. So I think it's interesting. इसलिए lectures सुनने बहुत important होते हैं. When I'm teaching you rusting concept, I always tell you the story that both water and oxygen are important for iron to rust, and how to prevent rusting. तो हम उसके ऊपर कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, कभी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर देते हैं, और फिर कभी उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, कभी उसको ऑयल में डाल देते हैं. That's how we can save it from rusting. Okay, so basically देखें, let's read the question. उसने कहा steel. Now you have to listen very carefully, please, everyone. Right? उसने कहा steel nails rust in the presence of air and water. Right? Plan an investigation to show that. So the first bullet, the coating steel nails with paint helps to protect the nails from rusting. Show that coating with zinc helps protect rusting, and which coating is more effective at protecting steel nails from rusting? You are provided with uncoated steel nails, steel nail with paint, steel nail with zinc, and a common laboratory apparatus. अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है, बहुत गौर से. देखिए, आपके पास एक नेल है अनकोटेड, एक नेल है जिंक वाला, और एक नेल है विद पेंट. आपने इन सबको वे कर लेना. इनिशियल मैथ सारी बात हर एक का फर्क होगा, उससे मुझे कंसर्न नहीं है. मुझे चेंज इन मैथ्स निकालना. आपने सबका मैथ्स मेजर कर लिया, ठीक है, और आपने 3 बीकर ले लिए. एक बीकर में भी डाल सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन इट्स बेटर टू डू द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली. आपने एक नेल डाला एक बीकर में व्हिच हैड वाटर, जिंक वाला नेल डाला और पेंट वाला नेल डाल दिया, और एटलीस्ट आपने उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर बात है रस्टिंग 1 घंटे में तो नहीं हो जाएगी. इट टेक्स टाइम, इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन. आफ्टर वीक हैज पास्ड, आपने ये नेल्स बाहर निकाले और इनको रीवे किया. जाहिर बात है आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 देगा, तो मास तो बढ़ जाएगा आयरन का. जो भी आपने इनिशियल मास लिया हुआ था नेल का, अब मास बढ़ जाएगा क्योंकि अब उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई साथ में. Fe2O3 बन गया. पहले आयरन था, अब वो Fe2O3 है, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग आ गई रस्टिंग की. अब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने इसका इनिशियल मास मेजर किया हुआ था, फिर आपने इसका फाइनल मास मेजर किया है. वो जो डिफरेंस इन मास है, राइट, वो बताएगा कि इस वीक के अंदर सबसे ज्यादा रस्ट जो है वो किसका लगा. जिसका मास सबसे ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो आयरन सबसे ज्यादा रस्ट किया. ओ मेरा बच्चा, एक बात याद रखिए, वाटर ऑलवेज हैज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. वाटर में हमेशा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में हमेशा. इसलिए तो आप मछलियां सांस लेती हैं. मास डिफरेंस जिसका ज्यादा आएगा, इसका मतलब है कि वो आयरन नेल ज्यादा रस्ट किए. डू आई मेक सेंस टू एवरीवन? Yes, sir. Great. Should we scratch some of the paint? नहीं, जनरल जैनब, हमने बेसिकली कुछ स्क्रैच कुछ तो करना ही नहीं है ना. हमें ये देखना है कि अगर जिंक की लेयर आई हुई है तो क्या आयरन नेल पे रस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा. आपने स्क्रैच नहीं करना उसको, फिर तो आपने उसको बिल्कुल वो अनकोटेड नेल बना देंगे आप. तो आपने बिल्कुल वैसे ही रखना है, एक अनकोटेड नेल, एक नेल कोटेड विद जिंक, और एक नेल विद पेंट, ठीक है. सो आपने इसको इस तरह ही डालना पानी में. हमने इनको इस तरह ही ऑब्जर्व करना है कि इनको रस्ट लगता है कि नहीं लगता. हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इनको रस्ट लगता है कि नहीं लगता पहली बात, और रस्ट अगर लगता है तो किसको ज्यादा लगता है, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं. नहीं, हमने तो खाली देखो, हमने बाद में खाली स्टेटमेंट बतानी है ना. हम बाद में खाली स्टेटमेंट बताएंगे कि जिसका मास ज्यादा आएगा उसको ज्यादा रस्ट लगा. अब हम रियल टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, तो हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन करें जो आपका मेथड है, कि what is the method which we shall use to find out that which iron was rusted more.
और हमने ये शो किया है कैसे कौन सा पेन कोड कौन सा से जी हमें ये बताने की जरूरत नहीं है the nail isn't in contact with water जी जैनब बेसिकली देखो माना जिंक के आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग है राइट और आपने ये चीज आपने पढ़ी हुई है थ्योरी में कि उसको रस्ट नहीं लगेगा कि ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है ठीक है लेकिन ये तो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है ना बेसिकली हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम उसको टेस्ट करें कि वाकई लगता है कि नहीं लगता Are you getting me? That's what we have to understand the question. अच्छा जैनब एक बात याद रखें if you have water right और अगर आप लेट्स फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ऑयल लगा दें ठीक है जो वाटर के ऊपर ऑयल फेंक दें ऑयल लेयर आ जाएगी आप उस वाटर में आयरन नेल रखें आयरन नेल विल रस्ट इट विल कंफर्म रस्ट आयरन नेल विल कंफर्म रस्ट हाँ अगर वाटर को मैं कर दूं बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती उसमें नेल फेंकूं और ऊपर मैं उसको ऑयल फेंक दूं वाटर के ऊपर तो अब आयरन नेल को रस्ट नहीं लगेगा सिंपल वाटर के ऊपर आप ऑयल फेंके उसमें रस्ट और उसमें आयरन नेल लगे तो इट विल रस्ट राइट So we studied that in experiments नहीं एक बात याद रखना मेरा बच्चा इफ इट्स सिंपल वाटर उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है और आपने आयरन नेल पानी में रखा हुआ है तो आयरन नेल रस्ट करेगा इफ इट इज बॉइल्ड वाटर राइट उसके ऊपर अगर आपने ऑयल फेंका हुआ है तो अब आयरन नेल रस्ट नहीं करेगा ये मैं पढ़ाता भी होता हूँ मेटल्स चैप्टर में जिसने तो पढ़ लिया होगा तो फाइन जिसने नहीं पढ़ा होगा in this coming week I'll be teaching you metals chapter and I'll be explaining this concept to you as well चलिए अब मुझे बताएं आप लोग क्या आपको ये बातें क्लियर है ये दो मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर करने थे बेसिकली राइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ठीक है क्योंकि you can write the answer in points as well sir will zinc will also react and so change in mass will also increase वैसे अमीरा if I tell you ना तो मेरा नहीं ख्याल कि rusting will happen in case of zinc ठीक है the mass I mean the initial mass and the final mass will remain same how does oil prevent rusting क्योंकि अगर आप आयरन नेल के ऊपर ऑयल लगा देंगे तो आयरन नेल वोंट बी एक्सपोज्ड टू वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी और ऑक्सीजन भी है अगर आयरन नेल को वाटर वेपर और ऑक्सीजन का एक्सपोजर नहीं मिला तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट रस्ट so this is important points in more powerful देखो अगर इस तरह के प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेट्स फॉर एग्जांपल इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड टू राइट इन द पैराग्राफिक फॉर्म बट इफ यू राइट इन द पॉइंट्स फॉर्म इट डजंट मैटर हम कभी मार्क्स नहीं काटते ना हमारे ऊपर इंप्रेशन बुरा पड़ता है एज फार एज द पॉइंट्स आर करेक्ट will zinc not react to water no Amira zinc reacts with steam okay question 1 का part B देखिए वो आपको कहता है कि two substances solution F and solid G were analyzed solution F was hydrochloric acid ठीक है and the tests were done on solution F and solid G ठीक है Lamia listen carefully please now solution F is hydrochloric acid वो कहता है now the tests on solution F we are doing हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे टेस्ट कर रहे हैं तो पार्ट A B C D E is on हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे बेरियम आयंस तो कोई पीपीटी ऑब्जर्व ही नहीं होगा पार्ट डी में उसने कहा है कि आपने ऐड किया ये बेरियम नाइट्रेट
तो क्या ऑब्जर्व होगा? कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता तो फिर आता व्हाइट पीपीटी, क्योंकि उसमें सल्फेट आयंस हैं। डू आई मेक सेंस, लामिया? Great. So these planning questions take time to resolve. ATP is easy. Yes, Hamza, I agree with you. Ji Shahir, which part? Achha, you're saying part C. Dilute nitric acid and aqueous silver nitrate were added to the third portion. देखो आपके पास उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ऊपर बता चुके हैं, आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला है, तो सिल्वर आयंस आर एडेड टू टेस्ट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और यहाँ तो क्लोराइड आयंस हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड आयंस हैं। तो अगर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgCl को व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व होगा ना, तो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl विल बी ऑब्जर्व। Okay, a student has a question that, sir, why is there no rusting in boiled water with a layer of oil? Is that because boiling water removes oxygen and oil prevents from re-entering it? Absolutely correct. If it's actually boiled water, it has no oxygen. If you put oil layer on it, oxygen can't re-enter. Only water is present. Since only water is present, no oxygen is there, so therefore iron will not rust. Gee, guys, are you all clear? I hope you enjoyed these questions. जो मैंने आपको बेसिकली अभी आपको मैंने दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है, जो पेपर 1 और पेपर 2 के, वो भी होल्ड बैक कर लें unless I again ask you to do these questions. ठीक है, I'm sharing one more paper with you today, which please ensure that you do it actually by tomorrow. आपने ये प्लीज आपने कर लेना है, क्योंकि मैंने कल डिस्कस करना है, क्लास में नहीं करना, आपने पहले आज कर लेना है, right? So that when we come back tomorrow for the class, we will discuss these questions. Okay, I hope I make sense. सर कल 5 PM हमारी क्लास होगी? जी बेटा होगी। आप प्लीज 7 मार्च के गाने की रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे और प्लीज को सेंड कर देंगे अगर अभी भी है आपके क्लाउड में। Oh हाँ, I'm extremely sorry. उसके बाद I forgot. Although मैंने तब चेक की थी, लेकिन उसके बाद I forgot actually सर। वो 7th मार्च के फिर आप कहते वर्क नहीं कर रही, मैंने यहाँ लिखा भी था 7th मार्च। Okay, okay sir. Alright guys, thank you very much. I'll be sharing the paper with you. वो जो मैंने आपको P1 और P2 दिया था उसको भी हॉल्ट पे कर दें, right? When I'll ask you again to do this, तो आप करेंगे। मैं आपसे एक और शेयर करूंगा अभी, जो कि आपने कर लेना है प्लीज before you come for the class tomorrow. Okay? Yes, we will be doing the P1 and P2. That's what I'm saying. All right, there we go, please, guys. Thank you very much. Take care, keep smiling and keep shining. It was a short class today. Thank you, Hafiz. I'll be sharing this lecture with you.